दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं, हमें आज़माने की कोशिश न करना। मुक़ल्लिद है मीसम के दारो रसन से, कभी भी डराने की कोशिश न करना। दुआ फातिमा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले આપણે એક સૂરે ફાતિહાથી શરૂ કરશું। તમામ મરુમીનને દુરૂના સવાલ ફાતિહા। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। हमारी बहनों बच्चियों सलामुन अलैकुम। આ ખાસ પ્રોગ્રામ બીબી ફાતિમાની વફાતના મોકા ઉપર તેમની શાનમાં રાખવામાં આવેલી છે। આ પ્રોગ્રામ બહેન અંજુમ બહેન જે ગાઈડોક તૈયાર કર્યા છે તેમની શુક્રિયા અદા કરું છું, અને તેમાં ઘણા પ્રોફેસર, કોમિટે મદ્રેસાના બધા ઇલેવ અને માવતરોનો તથા અમારા પ્રમુખ સાહેબનો શુક્રિયા અદા કરું છું, અને બીજા લોકો આ પ્રોગ્રામમાં અમને મદદરૂપ કર્યા છે તેનો પણ શુક્રગુજાર છું। સાથમાં તમને જાણ કરવામાં આવે છે કે મોહમ્મદ ઇમામ બારગામાં એટલે બાન્યુમાં ઇમામ બારગાઓ લોકો અને મહેફિલે ઝૈનબ લોકો બંને સાથમાં 21 avril સાથમાં પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે de 15h à partir de 15h à 17h। तो इंशाल्लाह बदा आशा छे के भाग देशो इंशाल्लाह। जाजा प्रमाणमां पण हाजरी आपो मेहरबानी करशो तमे इंशाल्लाह। હવે આપણે આજનો પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ એની પહેલા તિલાવતી કુરાનની શરૂ કરશું। બહેન સુકૈના ટીકરી બંદાને આવીને કુરાન પાકની તિલાવત કરો। આભાર। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجيب محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Sadakallahu al-aliyyul azim, salawat. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجيب હવે વિનંતી કરીશ બહેન રાઈશા મધુ પોએઝી en français। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجيب فرجه Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Que représente la voiture rebelle? Elle est celle que ne pourra jamais se passer un verre. Elle possède sous ses pieds les clés du paradis. Elle seule s'énorgueillit de pouvoir donner la vie. Car qui peut exister sans une mère pour l'enfanter? De ce privilège, seul Allah seul peut se vanter.
9 mois durant, elle nous encouvrait en elle, nous couvrant d'un amour et d'une attention éternelle. Les nuits, elle ramenait tendrement dans nos rêves la tranquillité nous berçant de ses bras qui ont guidé nos premières pas hésitants. Nous grandirons, mais ces sentiments seront là. Toujours vivants, nous accompagnons de prières et de conseils de la lucidité. Quels que soient les eaux où nous jetterons l'encre du sort, au grand Dieu, jamais elle ne cessera de se faire du sang mort. Pourquoi me demanderez-vous, tous innocents, mais simplement de votre bonheur ou de votre bien-être, que vous soyez ou pas à leur égard reconnaissant, son enfant restera le sien, bien mauvais, malheureux ou heureux. Une communauté sera noble si leurs mères le sont. Une communauté sera respectueuse si leurs mères le sont. Une communauté sera sage si leurs mères le sont. Une communauté sera cultivée si leurs mères le sont. Nos mères nous ont inculqué nos valeurs, nos attentions, à leurs paroles forgent nos mœurs. Pour toutes les mères et celles qui le seront tôt ou tard, prions pour elles qu'Allah leur accorde de bénédiction et clairvoyance, que le respect soit leur valeur et le savoir. Une recherche perpétuelle pour que chacune puisse être aussi pure et précieuse, telle la faïence, car ce sont les mères remplies de foi et de connaissances qui pourront ancrer durablement dans nos cœurs notre croyance. N'oubliez pas que nous serons éternellement vos miroirs. Salvat. હવે બહેન અમરીન કચરા ની વિનંતી કરીશ કે તેઓની મજાલીસ en français સંભળાવે. Chers fidèles de Sayyida Fatima alayhi salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous sommes rassemblés en ce jour pour commémorer le décès de la grande dame Sayyida Fatima alayhi salam. Ce jour est un grand jour, un jour mémorable, car il représente pour nous la disparition d'une femme exemplaire. Comme le disait le saint prophète durant sa vie, Fatima Sayyidatan Nisa'il Alami. Fatima est la dame de toutes les femmes du monde. En ce jour, posons-nous une question fondamentale. Que savons-nous de cette prestigieuse dame? Si nous nous questionnons, nous nous rendons compte qu'au final, malgré tous les majalis auxquels nous avons assisté, nous n'avons qu'une connaissance très brève de la vie et surtout de la personnalité de cette femme éminente. Alors que la dame Fatima alayhi salam est un modèle, un exemple à suivre pour toutes les femmes. Nous nous retrouvons parfois dans un flou complet vis-à-vis de son caractère et de son individualité. Pourquoi? Il est fort possible que la réponse à cette question soit la suivante. Nous n'avons vu qu'une facette de la personnalité de notre grand modèle. Il est donc important pour nous de connaître et de comprendre la dame Fatima sous tous les aspects. Nous savons que durant toute sa vie, la dame Fatima alayhi salam a accompli tous les rôles. Elle fut une fille modèle. Après la mort de sa mère, elle prit soin de son père de telle sorte que le saint prophète lui dit Fatimatu Umma Abira. Elle était comme une mère pour son père. Elle était toujours aux côtés de son père dans les pires moments. Elle a vu son père supporter toutes sortes de calamités pour l'islam. Et elle l'a soutenu, elle l'a défendu et elle l'a protégé. Quand elle se maria, elle fut une épouse parfaite. Elle fut une épouse exemplaire. La vie n'a pas été toujours facile chez l'imam alayhi salam. Mais Fatima alayhi salam devint son soutien, comme elle l'avait été pour son père. Enfin, elle fut une mère parfaite pour ses enfants. Elle les éduquait de la meilleure façon et leur apprit à défendre l'islam comme avait fait leur grand-père et leur père. Tout ceci caractérise une première partie de la personnalité de la dame Fatima. La deuxième partie de la personnalité de cette grande dame se définit par son caractère actif dans la vie sociale. Nous savons que la dame Fatima alayhi salam était la femme la plus savante de son époque. Elle donnait des cours dans divers domaines aux femmes de son époque. Elle était au courant de tous les problèmes économiques et politiques. Le caractère de la dame Fatima alayhi salam ne se définit pas seulement par une femme pieuse et spirituelle qu'elle était certes, mais elle était aussi socialement très active. L'un des événements dans lesquels elle a participé est l'événement de Mubahila. Le saint prophète emmena Fatima avec lui pour montrer que les femmes doivent participer à la vie publique. Leurs opinions ont autant d'importance que celles des hommes. Fatima alayhi salam, avec son hijab, accompagne sa famille le jour de Mubahila. La vie de la dame Fatima alayhi salam regorge de leçons morales et spirituelles pour nous.
Cette dame était une bonne fille, une bonne épouse et une bonne mère, mais son rôle ne s'arrêtait pas jamais. Quand nous regardons cet aspect de son caractère, nous voyons la femme patiente que nous avions connue est aussi brave et courageuse. Dans cet aspect de sa personnalité, cette dame exemplaire nous enseigne que chaque musulman a un devoir religieux, mais aussi social. Ainsi, en ce jour si spécial pour nous, fidèle de Sayyida Fatima alayhi salam, prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, le savoir et la piété pour que nous puissions suivre la voie de la grande dame Fatima alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. હવે છોકરીઓ ગ્રુપમાં એક મુનાજાત પેશ કરશે. Salawat par Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. आपके दरबार में बीबी ज़हरा ये दुआ है, बीबी ज़हरा ये दुआ है, दस्ते दुआ को जब भी उठाया मांगा है तेरी चादर का साया, या ज़हरा या ज़हरा वरदे मुसीबत में हर हुसैनी बस नाम तेरा होठों पे लाया। ऐ मेरी बीबी तंगदस्त हूँ मैं, ये कह के दामन फैला दिया है, बीबी ज़हरा ये दुआ है, बीबी ज़हरा ये दुआ है। आपके दरबार में बीबी ज़हरा ये दुआ है, वो बीबी जिसकी है गोद खाली, शौकत पे तेरी है वो सवारी, या ज़हरा मुझको भी दे दे असगर का सदका, मैंने तेरे दर से लो लगा ली। ऐ मेरी बीबी जिन गोदियों में औलाद है वो तेरी अता है, बीबी ज़हरा ये दुआ है, बीबी ज़हरा ये दुआ है। आपके दरबार में बीबी ज़हरा ये दुआ है, जो माए रहने बेआसरा हो, फर्शे अज़ा पर महवे बुका हो, या ज़हरा तू उनके पर्दों की लाज रही हो, जो तेरी ज़ैनब की ज़ाकिरा हो। ऐ मेरी बीबी जिंदा रहे वो भाई जो बहनों का आसरा है, बीबी ज़हरा ये दुआ है, बीबी ज़हरा ये दुआ है। आपके दरबार में बीबी ज़हरा ये दुआ है। Salawat par Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. હવે આપની સામે એક ડાયલોગ છોકરીઓ પેશ કરશે. આશા છે કે આપને ધ્યાનમાં આવશે જરૂર ઇન્શાલ્લાહ, અને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો, અને નાની મોટી ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરશો. સલવાત. સલામુઅલૈકુમ બચ્ચાઓ. वालेकुम सलाम आंटी। કેમ છો તમે બધા આજે? सारू से આજે આપણે એક એવી ઓરતના બારામાં ચર્ચા કરવાના છે કે જે એક માતા, એક દીકરી અને એક ઘરવાળીના નામ પર મિસાલ છે. તમને કઈ ઈડે છે કે આપણે આજે કેના બારામાં વાત કરવાના છે? જી બેટા? Bibi Hawa. ના, બીબી હવા તો નથી.
જી બેટા. बीबी खदीजा હવે બાજુમાં આવી ગયા. જી બેટા. बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम બિલકુલ સહી. આજે આપણે બીબી ફાતિમા ઝહરાના બારામાં વાતો કરવાના છે કે જે આપણા પ્યારા નબી અને બીબી ખદીજાની પ્યારી દીકરી હતા. હવે તમને ખબર છે કે જે તેમની વિલાદત ક્યારે થઈ છે? જી इस जमादियुल आकर 5 बरस બિલકુલ સહી. બીબીની વિલાદત જમાદીલ આખરના મહિનામાં થઈ છે. એ વખતમાં બીબી ખદીજા કે જે અરબના બહુ જ માલદાર ઓરત હતા, તે પોતાની પૂરી દોલત ઇસ્લામ માટે કુરબાન કરી દીધી. અને એ વખતમાં રસૂલે ખુદા અને બીબી ખદીજાના પૂરા મક્કા એમના દુશ્મન થઈ ગયા હતા. હવે તમને એ ખબર છે કે તેમની વિલાદત કઈ ગામમાં થઈ છે? જી मदीना ના. જી मक्का બિલકુલ સહી. મક્કાના ગામમાં તેમની વિલાદત થઈ છે. હવે હું તમને એક બીજો સવાલ પૂછું કે બીબી ફાતિમા ઝહરાની વિલાદતના ઉપર કયો સૂરો નાઝિલ થયો છે? જે દીકરી આ સવાલનો જવાબ દેશે એના માટે બધાએ ભેગા થઈને સલવાત કરશો. जी हाँ हमसे पूछो કે બીબી ફાતિમાની વિલાદત ના બારામાં કયો સૂરો નાઝિલ થયો છે? જી सूर्य दहर સૂરે દહર બી ઇમામ અલી, બીબી ફાતિમા, ઇમામ હસન અને ઇમામ હુસૈનની શાનમાં નાઝિલ થયો છે, બરોબર છે. પણ આપણે હમણાં ઈ સૂરાના બારેમાં વાતો નથી કરતા. બીજી કઈ જે છે, બીજો કઈ સૂરો? જી सूरह अल कौसर બિલકુલ સહી. શાબાશ બેટા. આપણે બધાએ હવે આ દીકરી માટે સલવાર કરશું. બચાવ. તમને ખબર છે કે જ્યારે રસૂલે ખુદાના ઘરમાં ઓલાદ નહોતી થતી, તેમના દુશ્મન એને બહુ જ મેણા અને તાળા મારતા હતા. એ વખતમાં રસૂલના ઘરમાં બીબી ફાતિમા ઝહરાની વિલાદત થાય છે અને ત્યારે આ સૂરો નાઝિલ થાય છે. તમને ખબર છે કે જ્યારે રસૂલે ખુદા, તમને ખબર છે કે એ જમાનામાં તબલીગ કરતા હતા અને તબલીગ કરતા કરતા તકલીફો એકદમની પડતી હતી. અને જ્યારે ઘરે પાછા વળતા હતા તો એમની આ દીકરીના ચહેરાને જોઈને તેમને સુકૂન અને ધારસ થતો હતો. આજ માટે આપણો સબક અહીંયા જ પતે છે, પણ તમે બધા નોટે કરી નાખો. આવતા સમય માટે એક જવાબ તમારા માટે છે. તમને ગોતવાનું છે કે બીબી ફાતિમા ઝહરાની ઉંમર કેટલી હતી જ્યારે તેમની શહાદત થઈ છે. લખાઈ ગયું બધાયનું? આ જ ભૂલવાનું નથી. હવે આપણે બધા ભેગા થઈને સલવાત કરશું અને આપણા દર્શને તમામ કરીએ છીએ. Allahumma salli ala